Hello students, welcome to Saurasa classes. This is the question number 36, get 2026. ये सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग को सॉल्व करना है कि solve the following initial value problem. dy dx is equals to this. So the matrix दिया गया है a equals to -3 4 -2 3. Okay. So यहाँ से लोग इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे. सो वी सी दैट ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज 0 एंड सो वी नो दैट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज ट्रेस a into x plus determinant of a. This is the characteristic equation of this matrix. So x square minus trace क्या है 0 into x plus determinant क्या है -9 plus 8 equals to 0. So x square minus 1 equals to 0. Therefore x equals to plus minus 1. So the eigenvalues are 1 and -1. So the corresponding eigenvector हम लोग कैसे निकालेंगे? So a minus I x equals to a minus I x क्या होगा? So this matrix A equals to minus identity. So -4 4 -2 2 x comma x and y equals to 0. So यहाँ से मिलेगा -4x plus 4y equals to 0 and -2x plus 2y equals to 0. So combinedly we get -x plus y equals to 0. That means x equals to y. So corresponding the eigenvalue lambda equals to 1. For lambda equals to 1, the eigenvector is 1 comma. Okay, this is 1. Okay, now for the lambda equals to -1, we get a plus of I x equals to 0. So the A matrix is -3 4 -2 3. तो इसके साथ आइडेंटिटी प्लस करेंगे. So is become -2 4 -2 4. So we get -2 4 -2 4. Okay, xy equals to 0. So from this we get -2x plus 4y equals to 0. That means 2x equals to 4y. That means x equals to 2y. So अगर हम y equals to 1 पुट करेंगे, so अगर y equals to 1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 2. So for lambda equals to -1, the eigen vector is 2 comma 1. So our general solution combining 1 and 2, हम लोग को general solution क्या मिलेगा? Y equals to c1 e to the power lambda 1x, that means e to the power x 1 comma 1 plus c2 e to the power minus x 2 comma 1. So हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कौन कौन सा है. अगर ऑप्शन में कुछ रहेगा तो अच्छा, ऑप्शन में यहाँ पर भी 1 1 2. अच्छा, हम लोग तो इनिशियल कंडीशन दिया गया है. इनिशियल कंडीशन क्या है? y0 equals to 1/2. So the initial condition is y0 is equals to 1 and 2. So क्या होगा? Therefore 1 and 2 equals to initial condition put करेंगे c1 e to the power 0 is 1 1 comma 1 plus c2 e to the power 0 is 1 2 comma 1. So we get c1 plus 2c2 equals to 1 and c1 plus c2 equals to 2. अगर इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो 2 c1 कैंसिल होगा, तो c2 का वैल्यू आएगा -1 और c2 का वैल्यू अगर इधर हम पुट करेंगे तो c1 का वैल्यू आएगा 3. सो आवर फाइनल आंसर इज देयरफॉर y इक्वल्स टू 3 e to the power x 1 1 minus e to the power minus x 2 1. So this is our final answer. So 3
minus 1. 3 minus 1, 3 minus 1. This is our final answer. So option B is true. This is easy and small time में कैलकुलेटिव हो जाएगा ये, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस कैलकुलेशन में. सो दिस इज द आंसर. D is true.